So what is Autolayout in terms of Figma? So let's first see what is not Autolayout. Okay, so let's say you have a frame like a mobile frame in Figma. You got a mobile frame and you take any object, okay, and bring it here. And this is inside this frame. Let's say, for example, यहाँ पर framing बनता है and ऐसा tree structure बनेगा. ये गलत करें नाम के साथ साथ टी स्ट्रक्चर बनता है. ठीक है, तो ये जो सर्कल है ये दिखा रहा है, ये ट्री स्ट्रक्चर दिखा रहा है कि ये सर्कल जो है इस फ्रेम के अंदर में. एंड दिस इज अ वेरी जेनरिक फ्रेम, लाइक layout can anywhere, and objects can move anywhere inside the frame. Okay, but this is what you call, this is, you can say it like this is open drawing, free form drawing, wherein you can move the object anywhere you want. Okay, but let's say you make this an auto layout. Once you make this an auto layout, what I did is I clicked it and made it an auto layout. अब auto layout में क्या होगा? What will happen? डिटेल मैंने तुम्हें बताया. I'll give you the concept basically. जब भी तुमने इसको ऑटो लेआउट बनाया ना, तो ऑटो लेआउट में बेसिकली तीन चार डेफिनेशंस होते हैं. For example, this one. This is auto layout. एंड ऑटो लेआउट में डेफिनेशन क्या होता है? ये अलाइनमेंट होता है बेसिकली. या तो ये सेंटर में रहेगा या तो लेफ्ट सेंटर में रहेगा, लेफ्ट बॉटम में रहेगा. इस डेफिनेशन में ही वो एलिमेंट रहेगा. इट वोंट बी एनीवेयर एल्स. ओके, हाउ मेनी सेंटर, हाउ मेनी, 9 places, 9 positions. Auto layout basically has 9 positions. Okay, and element would only align within these 9 positions. Okay, 9 positions. So let's say this is also an auto layout. This, oh yes, I didn't know this. Let's delete this. This make this normal. White background. Let's choose a background. Don't worry about the design. First, understand the concept. Designs, you are in right direction, but you are missing the technical part. So I put the picture inside. Or let's so you see, right now, all the text are within this UI background. All the text are where are they aligned? Can you tell me specific? Left, but where? Left alignment, but where? Left, maybe you have 2 other spaces. Left, center, they are aligned, and I can put it to different parts. Okay, I can put different parts. Okay, but so if you see it in your design, you have all of them are absolutely
They don't have to be absolute element. So what is absolute element? Absolute, let me go back to this. So let's say, yes. So this is normal frame. Normal frame where everything is aligned everywhere. There is no specific reasoning. They can any element can be aligned anywhere. So like, I'll write it down. Any element, any group. Okay. Second में you have auto layout. Auto layout element to specific one position from 9 positions given by auto layout. I'm not giving you what you call coding term, but I'm giving you a very layman term. That's what they have. Okay. So that is auto layout, complete auto layout. Element would be aligned at the top. This, 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 this. It would not be aligned like, let's see here. Okay. You will have to put more element. If there is only one element, it would not be aligned here. You'll have to set the weight and everything properly. It would be aligned only at one specific place. And you would have multiple elements. And then they would, let's say if you put a center alignment, then they would center aligned like this. With proper alignment, with this equal spacing all over the place. That's what auto layout is. Okay. There is another part within auto layout. Let's say auto layout with and don't worry, I have seen engineer directors, they don't understand why there is a problem. It takes, I worked on a project like this, and the technical architect had a problem understanding what this means. So auto layout with absolute position element. So let's say you have one element, you created an auto layout, but what you want to do is you have one more element. You don't want it to align according to auto layout, according to a specific alignment position, according to those 9 specific alignment positions. Let's say you want to align it here. Let's say you wrote some content like this inside it, and this is part of auto layout, and you want to align this like a highlight here. Okay. You want to make this design look beautiful by adding one element which you think can add a value, and it doesn't have to be an auto layout because you have to put it at a random place for that one element. There could be multiple elements. You can make multiple absolute positions. There is no control of that. But you want a specific element to not have a specific position. You want that element to have a position according to you. Okay. Because this will all be coded, and coding language works like this, that everything has to be defined. When you export Figma to coding, everything has to be defined.
So let's go see the same thing in here. Okay. So this is complete auto layout and I have everything in center. Let's put one more color so it's more visible. Let's make it black. Or, yeah. So let's say I want an element inside, but I want just to cover, just to like a circle, but it has to be center of this whole context. So I created a circle, let's say, but I don't want this circle to be aligned perfectly according to auto layer. Okay, what I will do, I will click on absolute element, and now this element, this circle, let's say, red circle is free within that UI background frame, not outside. Okay, not outside, but within this UI background frame, this eclipse is free to move anywhere. But if you try to take it outside, it will either it will go complete outside of the main frame, or it will show you that it is hiding, it is inside that specific element. Okay. Now I can place it anywhere in that specific UI background frame, and I can also decide where it should be. So let's say I want it to be below. I think this is weird about Figma that on frame is on top, but eclipse is on bottom. But in the screen, eclipse is on top, frame is in the bottom. They have to really do something about it. It's a jet index. So I want this circle to be behind that text, and text is where within this frame. Okay. Why do I have a text auto layout again? Because I have two kinds of text, and there are other elements inside it. I've seen somewhere that you don't have a lot of elements, but you still have created auto layout, and it's unnecessary to create too many auto. Okay. So let's say I bring it like this, and then this goes behind. Now and why I did it? I did it to, let's say, make some kind of a pattern, right? Let's say I can make one more pattern where put it here. Basically, Figma is for UX designer, but graphic designers are random. Okay? And Figma is giving you option to be both graphic designer also and also a UX designer. Okay, just to make the design look better. Okay, hello. Hi. Yeah. आवाज नहीं आ रही थी. अच्छा, हाँ, बीच में कॉल आते रहते हैं. समझा मैं क्या बोल रहा हूँ? Yes. Now, do you understand what mistake you might have made? Yes. पक्का. अच्छा. Well, let's go to your design. I hope so you understand. See, because I want you to have a very clear understanding of why you are doing what you're doing. If you're not, like, if you don't have a clear understanding of something, then it becomes a problem. Not just for you, also for any project. It's not about now, but if you don't learn perfectly now, you won't be able to deliver perfectly later on. Where is your project? So, this is, I think this is not. See, recent. I have opened your project. Okay, this one. UX one.
So let's go comment by comment. Okay, I'll show you the mistakes and then you correct it later on. This I will edit from the video. So let's open the comments. And UX managers will not do that. I'll be very honest with you. They'll just tell you have made the mistake, correct it. So let's go to the first comment. There is the first comment here. The text should come in center. You already did it. Let's see how you did it. Yeah. And then why do you have see? So this is your text. This is your cover. See, you have cover, and on the cover you have image. Then why do you have again one more frame and then one more frame? Why do you need these? Because you have only two elements, right? One image, one main frame, and one text. Text. Yes. Why do you need then these two? And you said your main frame can be an auto layer, right? Right. Too many frames. Okay. Let's go to second one. You have extra. That is again I gave you too many frames. Okay. Let's go to this one. Yeah. So this, let's say this. Okay. Login does not need active. Yeah, login button, it's a button, right? Why do you need active here? And it's a mobile application. It does not need active. Okay. And second is, एक बटन बनाओ तो भी इनफ है ना, दो बटन बनाने की जरूरत नहीं, there is no see, need to तुम बटन बनाओ मगर उसमें सारे प्रॉपर्टीज डालो आइकन्स के साथ, right. मगर Only one button. हाँ, create one button with all the properties and yes, and you can change it everywhere. Okay. Right. Now let's see the property of this specific button. We are here. So let's say this property. This frame is not named again. That's a problem. And why is this frame this much only? And login is going outside of that frame. You see, frame is this is small and login is going outside of that frame. That means there is some problem with this auto layout. Okay. And do it again everything. Yeah. See, again, right? Again, you have main frame, and then again you have one, and you have only one specific text, right? Then why do you need extra auto layout? Okay. Am I annoying a little bit? I'm asking you. Yes. Yes. Okay. Yeah, because see, perfection would not come if I'm not annoying. You don't like it or you like it? Actually, mistake नहीं तो आप मुझे बताओ. हाँ, तो वही तो मेरा काम है ना यार. नहीं बताऊंगा तो फिर you will keep doing the same mistake. Right. इसका काम क्या होता है? Okay. सेम चीजें सेम मैंने डाला है. शैडो इसमें उतना नहीं चाहिए. मैंने ऐसा क्यों किया? और देखो इसमें बटन कुछ तो गड़बड़ हुई. हाँ. मुझे नहीं समझ में. I got confused. तो मैंने ऐसे डबल कुछ कर दिया. स्लो करो. देखो तुम एक दिन में पूरा पेज मत बनाओ. एक दिन में 4 पेज मत बनाओ. ठीक है. मैं इसके लिए तुम्हें बोला कि रोज तुम 1 घंटा लो बट प्रॉपर काम करो. डू इट प्रॉपरली. Okay. And also see, this does not look like a button. Button and field box में ज़्यादा difference नहीं लग रहा. Button should have highlighted there. इसमें बटन See, button है ये तुम्हारा login है button है और
ये तुम्हारा इंटर इमेज इज अ फील्ड फॉर्म, तो वो दोनों सेम लग रहा है, राइट? बटन का डिजाइन अलग होना चाहिए। हाईलाइट कलर में देना चाहिए। एग्जैक्टली। मैंने वही किया था पहले, फिर मैंने वापस चेंज किया, मैंने ब्लू कलर में डाला था पैटर्न। That is again you have to do. And let me see if the text is, you have taken it from where? Font is there. Why is this a, see, this is also a different font, this text. Font is different. Yeah, this is not coming from your, We have to use only 2 or 3 fonts. Exactly, you have to use 2 or 3, but you have to only use fonts you created a style of. Okay. If you have not created a style of, then you cannot use that. Okay. Let's go to another comment. Yes. यहाँ पे सारा ऑटो लेआउट रॉन्ग है, बता दिया ऑलरेडी। अभी जो हाँ, मैंने अभी वही तुम्हें समझाया। नहीं, तीनों में तुम्हारा पूरा ऑटो लेआउट रॉन्ग है, तो तीनों पे काम करना पड़ेगा। अब वेलकम पेज पे जाते हैं, देखो सारा तुम्हारा एब्सोल्यूट पोजीशन है, सारे एब्सोल्यूट पोजीशन है, दे डोंट नीड टू बी इन एब्सोल्यूट। अभी मैंने तुम समझाया ना कि एब्सोल्यूट पोजीशन क्यों होगा, अगर तुम्हें एक स्पेसिफिक एलिमेंट एक स्पेसिफिक जगह पे चाहिए तो ऑटो लेआउट में सब ऑटोमेटिकली अलाइंड हो जाता है, राइट? तीनों में सेम प्रॉब्लम, तीनों में हमारा ऑटो लेआउट का इशू, तो मैं सबको एब्सोल्यूट पोजीशन में रख दिया। ठीक है, लेट्स गो टू दिस। ये मुझे बताइए, ये कहाँ से लेना है, ये जो सोशल मीडिया आइकन से, वेयर डू आई गेट इट फ्रॉम? नहीं, वहां से ले लो, तुम्हें यहाँ पे मिल जाएगा। सी, यहाँ पर में जाओ तो जस्ट सर्च फॉर आइकन्स and go to any platform. So I search for social media icons. No, search for first icons from here and then go to any platform. Okay, let's say I'll go connected, search for social media icon. सोशल मीडिया आइकन तुम्हें मटेरियल लाइब्रेरी में नहीं मिलेगा, वो ऑलरेडी दिखा रहा है। पिक्चर्स आ रहे वो सोशल मीडिया, ये देखो तुम कैसे सोशल मीडिया को तुम इधर लो। सबसे पहले तो तुम यहाँ नहीं करोगे डायरेक्टली, तुम मटेरियल डिजाइन में तीनों करोगे। ठीक है, मटेरियल डिजाइन में क्या करोगी, सिस्टम डिजाइन करोगे, इसको ड्रैग करके यहाँ लेके आओगी, इसको ड्रैग करके यहाँ लेके आओगे। ठीक है, सब मेरा भी लिमिट यहाँ पे पार होगा, मैंने बहुत सारा गूगल। हाँ, सबको तुम ट्रैक करके लेके आओगी। उसका बेसिकली क्या करोगी, उसका साइजिंग सेट करोगी। क्या साइजिंग है इसका, बहुत ज्यादा बड़ा साइजिंग है, मेरे को तो 24 पिक्सल चाहिए। ठीक है, तो मैं क्या करूँगा, 24 पिक्सल सेट कर लिया। अब इसका मैंने कंपोनेंट बना लिया, इसका कंपोनेंट बना लेंगे और 3 अलग अलग, जैसे ये हमारा इसका अलग से कंपोनेंट बना लिया। मान लो क्या कुछ नहीं लेने नहीं देगा, आइकॉन ऑफ आईडी अच्छा है, बट सब चीजों के लिए मटेरियल यूज करो। ये सब छोटे मोटे चीजों के लिए, जैसे सोशल मीडिया, उसके लिए यू कैन यूज प्लगइन। तो लेट्स फेसबुक, I'll take Facebook from here, drag किया, ठीक है, and then I'll take it in the size of it 24 here already, properties. Let's go to X,
नेक्स्ट नहीं ले रहा है, लेट्स गो टू लिंक्डइन। लिंक्डइन आ गया। ये इसका साइज क्या है, इसका भी 24 है, इसका भी 24 है, इसका भी 20। मिल गया मुझे तीन। ठीक है, अब तीनों को मैं पकड़ूंगा, स्टार सेलेक्ट करूंगा और मैं इसको कंपोनेंट बना लूंगा। क्रिएट कंपोनेंट सेट। क्रिएट कंपोनेंट सेट कर लिया, कंपोनेंट का नाम रखूंगा सोशल मीडिया। ठीक है, तो ये क्या है, इंस्टाग्राम हो गया। ये क्या है, इसका नाम फिक्स रखना फेसबुक। ये हो गया तुम्हारा। ये क्या है, सोशल। अब तुमने जो मिस्टेक किया यहाँ पर कि ये तीनों अलग अलग क्यों, क्योंकि ये तुम्हारा एक मैंने वो सर्कल लिया अलग से, सर्कल पे नहीं 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 नहीं, वो नहीं बोल रहा हूँ मैं, वो नहीं बोल रहा। तुम्हारा वर्टिकल लेआउट है ना, वर्टिकल लेआउट में अगर तुम्हें हॉरिजॉन्टल कुछ भी सेट करना है विदिन वन स्पेसिफिक पैरामीटर, तो ये तीनों को एक साथ ऑटो लेआउट में होना चाहिए। राइट, एक साथ ऑटो लेआउट में होता, फिर तुम एक कंपोनेंट, जैसे ऐसा मैं बोल रहा हूँ, मान लो कि ये अब मुझे आइकन सेट करना है। ठीक है, तो मैं मॉकअप्स पे गया, यहाँ पर मुझे आइकन सेट करना है। Let's go to here. मैं बॉडी में ही, बॉडी के बाहर भी कर सकता हूँ, क्योंकि वो लिंक्डइन का अलग बात, वो सॉरी साइन इन का अलग बात। मैं अपने एसेट में गया और मैंने यहाँ पे सोशल मीडिया क्रिएट किया है, इसको मैं यहाँ लेकर के आया, इसको मैंने 2 डुप्लीकेट मारा, अभी ये डुप्लीकेट बन गया। अभी ऐसा आ गया, ये मैं तीनों को सेलेक्ट करूंगा और इसको ऑटो लेआउट बना दूंगा और इसको हॉरिजॉन्टल करूंगा। इसका नाम रखूंगा सोशल मीडिया एंड फिर तीनों का कलर चेंज कर दूंगा जो मैंने सेलेक्ट किया है। लाइट को जो बैकग्राउंड है मेरे को यहाँ से चेंज करना है, यहाँ से चेंज कर दूंगा लाइट को, और यहाँ में जब सेलेक्ट करूंगा तो मुझे ऑप्शन दिखा देगा यहाँ पर कि ये लिंक्डइन का होना चाहिए या फेसबुक का होना है। हो गया राइट। अब ज्यादा से ज्यादा क्या कर सकता हूँ, मेरे को मान लो कि आइकन अच्छे से हाईलाइट करना है, तो इसका जो मेन फ्रेम है ना, उसको मैं थोड़ा सा पैडिंग दे दूंगा 20 पिक्सल एंड उसको कलर दे दूंगा लेट्स से दिस, एंड उसको थोड़ा सा कॉर्नर दे दूंगा 20 एंड पैडिंग ज्यादा दे दिया है तो 10 दे दूंगा। हो गया मेरा सोशल मीडिया है। स्लोली करो, डोंट थिंक लाइक कि तुम्हें see you are actually my first student outside the company. Okay, I want you to learn so well that you go into any job and the company should ask किसने सिखाया है।